Okay, everyone. Assalamu alaikum. I was just setting some things up. So now it's done. Let's begin. Walaikum assalam, Sahafi. I hope you guys are all well. So today we are going to be starting with we are going to be starting and completing this paper, May June 2022, paper 2 variant 2. ठीक है, आज हम ये वाला पेपर कर रहे होंगे इंशाल्लाह. Before we start, just a reminder to subscribe the channel if you haven't already. And if you look at the description below, you'll find a lot of other useful content on the channel on O-level maths. So you'll find some other yearly past papers that I've already solved, and also some videos on the major topics that you have in your syllabus, in which I've covered the concepts and also done some past paper questions, some topical past paper questions. Okay, so have a look at that, and you should find that helpful. Now, let's start with this paper. May, June 2022, paper 2, variant 2. All right, so remember the calculator is allowed in this paper, and it's a 2-hour and 30-minute paper. We'll try to do it as quickly as we can. Let's see. Question number 1, let's start with this one. Yes, Safi, that's going to be helpful for you as well. IGCSE में भी जो आपका syllabus content होता है वो तो यही होता है. आपका एग्जाम कब है? I haven't had the chance to look at the date sheet for IGCSE. I thought उनके एग्जाम्स बिल्कुल शुरू में थे, तो अगर तो आपके एग्जाम्स में भी टाइम है, I might be able to do some papers for IGCSE as well. But if they are very soon in the next few days, then it might be difficult because there is a lot of A-level content that I'm making at the same time as well. तो हम शायद Cambridge O-levels 4024 वाले syllabus के yearly past papers ही कर रहे होंगे, but this is also going to be helpful for you because the syllabus content is pretty much the same. बहुत थोड़े बहुत differences हैं, ज़्यादातर syllabus वही है. Okay. Acha. Let's start with this. Question number 1 from this paper. It says in 2021, the cost of posting a letter was 84 cents. Now, a company posts 1,950 letters. Find the cost in dollars to post these letters. Now, how do we think about this? 84 cents. How much is that? This is $0.84, right? 1 cent, $1 is 100 cents. So 84 cents कितने हो जाएंगे? $0.84. A company posts 1,950 letters. Total आपने cost निकालनी in dollars. All you have to do is just multiply these two numbers. 1 letter की cost 0.84 है. इसको multiply कर दें 1950 के साथ and see what that gives you. And that's going to give you the total cost. Okay, 1950 into 0.84, that is $1,638. Okay, that's the cost that we get. $1,638. Let's move on. Part 2. It says, in 2022, the cost of posting a letter is 96 cents. So notice the difference. पहले उसने 2021 की बात की. Now they're talking about 2022. And in this year, the cost of posting the letter is 96 cents. Calculate the percentage increase in the cost of posting a letter. Remember, increase या decrease जब हम calculate कर रहे होते हैं तो हम कैसे करते हैं? Change find करते हैं, उसको divide करते हैं original से. So you can also remember it this way. It's the new number minus the old number divided by the old number multiplied by 100%. That is what gives you the change. Okay, यहाँ पे percentage increase यानी ये positive number आना चाहिए. New cost is 96. Previous cost was 84. Divide हम करते हैं पुराने वाले number से, original number से. That's 84. Multiplied this by 100%. What does that give you? 12 over 84 into 100. And that turns out to be 14.286%. You can write it as 14.3% in your answer. And that's the final result that we get from this. Okay, that's the percentage increase. Now, part B says, company A posts 1,200 letters in 1 month. So यहाँ पे उसने लिखा है cost of posting a letter is 96 cents. 15% discount when monthly package is more than $1,000. Monthly postage is more than $1,000. So अगर आप $1,000 से ज़्यादा post करते हो,
एक मंथ के अंदर, तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाता है उसके ऊपर. Yeah, that's what the states. Now there's a company A that posts 1200 letters in 1 month. There's a company B that posts fewer letters in company A in the same month. So company A से उसने कम letters post किया. And there is company A and company B. They each pay the same amount to post their letters that month. Okay. अब देखिए कंपनी A ने 1200 letters post किए हैं और B ने उससे कम letters post किए हैं, लेकिन उनकी जो amount है that is still the same, right? Amount paid is still the same in this case as well. We need to find the number of letters that company B posts in that month. अच्छा हम देखते हैं 1200 letters की cost तो निकाल सकते हैं आराम से, right? 1200 into 0.96, कंपनी ए की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? लेट्स इवैल्यूएट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. 1200 into 0.96, this turns out to be $1152. That's the cost for company A. Okay, लेकिन अब देखें इनको इसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है. उसने कहा $1000 से जब ज्यादा कॉस्ट होगी तो यू विल गेट अ 15% डिस्काउंट. अब इससे 15% डिस्काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? लेट्स इवैल्यूएट दैट नंबर. 15% discount in this. How can you do that? One way to do that is 1152 into 85 over 100 कर दें, right? 15% आपने कम करना है तो 100% ओरिजिनली था, 100% आपका ओरिजिनली था, उसको आपने क्या करना है? 85% पे लेकर जाना है. So what is that going to become? 1152 into 85 over 100. Let's see what that gives us. This gives us $979.2. ये कंपनी ए को टोटल कॉस्ट पड़ती है इसके अंदर. ठीक है, दिस इज वन वे टू डू इट. आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं. आप ये भी कर सकते हैं 1152 में से माइनस कर दें 1152 का 15%, एंड दैट विल गिव यू द सेम थिंग एज वेल. That's going to be $979.2. दोनों तरह से कर सकते हैं. You'll get the same result from both of these. Okay? अब आपको क्या करना है? आपको फिगर आउट करना है कि कंपनी बी ने कितने लेटर्स पोस्ट किए हैं सच दैट उसकी जो कॉस्ट है टोटल वो भी $979.2 है. अब कंपनी बी का देख लेते हैं. कंपनी बी के टोटल पोस्टेड लेटर्स कितने हैं वो हमें नहीं पता. लेट्स कॉल देम एक्स. नंबर ऑफ लेटर्स उन्होंने पोस्ट किए, लेट्स कॉल दैट एक्स. एक्स इंटू 0.96, दैट शुड इक्वल $979.2. अब देखें उन्होंने कम लेटर्स पोस्ट किए ना, तो इसका मतलब है उनको, अगर उनकी कॉस्ट ये है तो उनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा उसके ऊपर, तो इस पर डिस्काउंट नहीं होगा. x into 0.96 that equals 979.2. ये हम इवैल्यूएट कर लेंगे और इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. लेट्स सी व्हाट दैट टर्न्स आउट टू बी. 979.2 divided by 0.96, and that is giving me 1020. This is the number of letters that they posted. Okay, so this is 1020. Okay, yes, so that's correct. Yashvin, walaikum assalam. Safi, that's correct. 1020, that's the result that we get from this. This is what we were looking for here. Okay, let's move on to part C of this. It says in 2022 now, the cost of posting a parcel with a mass of 1 kg or less is $4.6. The cost increases by $1.1 for each additional 0.5 kg. अच्छा, तो 1 kg तक फ्लैट रेट है $4.6. आप जितना मर्जी पोस्ट करें, 0.7 kg, 0.5 kg, जो मर्जी आप पोस्ट करेंगे $4.6 आपका चार्ज होएगा. 1 kg से every additional 0.5 kg gives you costs $1.1 extra. We need to find the cost of posting a parcel with a mass of 3.5 kg. अच्छा देखें, 3.5 kg को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं. 1 kg की कितनी कॉस्ट है? 4.6. तो हम 3.5 को लिख सकते हैं 1 प्लस कितने 0.5 आपने इसमें ऐड करने हैं, और 1 plus 2.5 होगा ना. दिस इज 3.5. तो 2.5 कैन बी रिटन एज 5 into 0.5. 2.5 can be written as 5 into 0.5. This is the total mass that you have. अगर इसको हम ब्रेक डाउन कर लें,
अब इसकी जो टोटल अमाउंट होगी, जो टोटल कॉस्ट होगी, फर्स्ट 1 kg की कितनी है? $4.6, दैट्स दिस। उसके बाद हर 0.5 kg की कॉस्ट कितनी होगी? इसने यहाँ पे दी हुई है 1.1, so you say 5 into 1.1, let's see what that turns out to be. 4.6 plus 5.5 इनको ऐड कर लें और देखें आपके पास क्या आता है। 4.6 plus 5.5 and that turns out to be $10.1. But remember, जब आप डॉलर्स में कोई अमाउंट लिखते हैं, it's better to write it to 2 decimal places because वो सेंट्स जो होते हैं 100 cents होते हैं एक डॉलर के अंदर, so it's better to write it like this, $10.10. That's the final result that you get. 10.1 भी लिख सकते हैं, that's also fine. It's better to write 10.10 like this. Part D of this, it says the cost of posting parcels increases by 7.2%. After the increase, the cost of posting a parcel is $13.4. Calculate the original cost of posting this parcel. Okay. अब देखें, उसने कहा है कॉस्ट जो है इंक्रीज कर जाती है 7.2% से, और इंक्रीज करने के बाद जो कॉस्ट आपकी है एक पार्सल की, दैट इज $13.4. We need to find the original cost. Let's say the original cost is X या C or whatever letter you want to represent it by. Original cost आपकी अगर X है, वो इंक्रीज हो गई है 7.2% से. One way of thinking about this is, ओरिजिनल कॉस्ट अगर 100% थी, इसमें आपने 7.2% बढ़ा दिया है. What does that give you? That gives you 107.2%. तो X को अगर आप 107.2% से मल्टीप्लाई कर दो, or in other words, you can say 107.2 divided by 100 से मल्टीप्लाई करो, what should the result be? The result should be equal to $13.4. उसको इंक्रीज करके रिजल्ट ही आना चाहिए $13.4. This is one way of doing this. Another way of doing this could be X plus 7.2% of X. That's the same thing. That gives you 13.4. दोनों में से किसी भी तरह कर लें, whatever you're more comfortable with. इसको solve कर लें, आपके पास X की value आ जाए. ठीक है, let's figure this out. 13.4 multiplied by 100 divided by 107.2, and that is giving me $12.5. So the original cost of posting this parcel should have been $12.5. Okay, $12.5 initially थी, उसको अगर आपने increase किया 7.2% से, तो वो $13.40 होगी. ठीक है, this is the final answer here, part D. Let's move on. Question number 2. Now, question number 2 says A equals 3P plus Q. We need to find Q when A equals 23 and P equals 5. Okay. इसके अंदर इनपुट करते हैं. That's all that I have to do. 23 equals 3 into 5 plus Q. Evaluate this. Yeah, देखें क्या आता है. 23 minus 15, that's going to give you 8. Okay, that's pretty straightforward. Expand and simplify this. It's going to be 2 into 2x plus 5. That's 4x plus 10 plus 3x minus 18. That becomes 7x minus 8. And you get 2 marks for this as well. That's a 7x minus 8. Okay, so these are very simple problems. You have to pass here. Then you have to solve this linear equation. What does that become? 3 goes to the other side. It becomes minus 2. Y equals minus 2 over 5. Yeah, well, you have to pass minus 2 over 5. Okay, then you have to factorize this. Let's think about this now. Factorize करना है, यानी कि आपने कोई चीज common लेनी है. What can you do for this? You can take 4 common and also R common for both of these. 4R अगर हम common लें, what are we left with inside? 3R minus 2S. And that's it. We can't factorize this any further. This is the final result. That's 4R into 3R minus 2S. That's the result that we get from this. Rearrange this thing, A equals 3B to make B the subject. What does that become? B equals A over 3, बस 3 जाके वहाँ पे divide हो गया, and that gives you B equal to A over 3. All right, that was 9 marks. These are all just free marks. Seriously, right? बस आपने ये कर दिया इसमें. ठीक है, B subject बना दिया, that B equals A over 3. Okay, let's move on. Question number 3. It says a 5-sided spinner is numbered 1, 2, 3, 4, and 5.
The table shows the results from spinning the spinner 200 times. अच्छा 200 टाइम्स स्पिन किया, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 51, यानी 200 में से 51 टाइम्स आपके पास 1 आ रहा है, राइट? और 19 टाइम्स आपके पास 2 आ रहा है, एंड सो ऑन. Okay. A pie chart is drawn to show this information. Calculate the angle of the sector representing the number 4. Okay. Pie chart क्या होता है? सर्कल में आप रिप्रेजेंट करते हो, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्रीज. कितना एंगल रिप्रेजेंट करोगे नंबर 4 को? 35 है, कितने में से? 200 में से. So what should the angle be? 35 out of 200, right? That's the fraction that we have for this frequency. 35 over 200, 200 में से 35, इसको multiply कर दें 360 के साथ, and that's going to give you the angle that you have here. 35 over 200 into 360. ठीक है, that gives you 63. Angle जो यहाँ पे होना चाहिए, that should be 63 degrees. All right. Another way to think about this is using ratios. आप ये कह सकते हैं 200 को 360 degrees represent करता है, 35 को कितना represent करेगा? उसको x कह लें, cross multiply, and that gives you 200x equals 360 multiplied by 35, and that's going to give you the value for x, which turns out to be the same as this, which is going to be 63 degrees. Okay, you can also do it using ratios, and that's also going to be okay. Part B, use the results to estimate the probability that the spinner lands on 3. Okay, 3 की probability क्या हो जाएगी? Frequency कितनी है? 28 out of 200. तो relative frequency वाला concept use करें. Out of 200, 28 जो है आपका number है जो आपकी condition को satisfy करता है. Probability क्या हो जाएगी? 28 over 200. इसको simplify कर लें, देखें आपके पास क्या आता है. कैलकुलेटर में डालें सीधा, that gives you 7 over 50. Okay, probabilities को हम normally fraction के terms में छोड़ सकते हैं. So this is 7 over 50. That's the probability that we were looking for here. Okay, let's look at part C now. It says use the results to estimate the probability that the spinner lands on a number that is a factor of 30. Okay, now that's interesting. Factor of 30. You have these 5 numbers. इनमें से कौन से 30 के factors हैं? 1 is a factor, 2 is a factor, 3 is a factor, 4 is not a factor, right? 30 does not divide 4. 5 is also a factor. 4 के अलावा बाकी सारे factors हैं. ठीक है? So what's the probability of the spinner landing on a number that is a factor of 30? ये 4 cases आपके पास बन रहे हैं. इन सबको add कर लें, 200 से divide कर दें. आपको पता है 4 क्या था? 35 times, तो बाकी कितने होंगे? 200 minus 35, that's going to be 165. आप add करके भी देख लें बाकी सबको. Add these 3 numbers and 67, that's going to give you 165. Out of how many? 200. You can see what that turns out to be. I think it's 13 over 20. Let me just try that. No, 165 over 20, 200, sorry. That's 33 over 40. Okay, no, that is totally wrong. 33 over 40. Okay, that is what we get from this, 33 over 40. साफी those questions जहाँ पे 2 लोगों का आपने चूज किया है probability के केस के अंदर, you should always assume कि जब first आपने चूज किया है उसको वापस replace नहीं किया. Replace सिर्फ आप तब करोगे जब उसने क्वेश्चन में explicitly mention किया होगा. ठीक है? So next time जो है probability change हो जाती है. ठीक है? तो वो आपने बस ध्यान में रखना है. We'll have a look at that if it comes in one of the papers that we do. Let's look at part D now. The spinner is spun 3,000 times. Estimate the number of times it lands on an even number. Okay, now how do we think about this? सबसे पहले तो probability find कर लें of landing on an even number. Let's find the probability. और probability से भी कर सकते हैं इसको, वैसे directly भी कर सकते हैं. आप ये भी कर सकते हैं कि 200 times जब आपने उसको किया है, उनमें से कितनी दफा ये even number पे land किया है? जो आपने 200 times spin किया है, उसमें से कितनी दफा इवन नंबर पे लैंड किया? इवन नंबर्स कौन से आपके पास? 2 and 4. लेट्स काउंट देम.
19 plus 35, what's that? That's 54. 200 में से 54 times even number पे लैंड किया है, राइट? तो अगर आप 3000 times उसको स्पेंड करते हैं तो उसमें से कितने दफा लैंड करता even number पे? You can use ratios again, cross multiply, and that gives you 200 times x, that equals 3000 into 54, and x equals, let's evaluate that, 3000 divided by 200 into 54, and that turns out to be 810. So out of 3000 times, you would expect that it would land on an even number 810 times. This is one way of doing this. Another way of doing this could be कि आप probability find कर लें even number की. वो कैसे आएगी? 54 times आपके पास आ रहे हैं total 19 plus 35 out of how many? Out of 200. So probability of even number क्या हो जाएगी? 54 over 200. एक नंबर पे एक दफा स्पेंड करने पे ये probability है. तो अगर आप 3000 times spend करते हो तो क्या हो जाएगी? 54 over 200 into 3000. And that would also give you the same result. Okay, so there are always, or in most cases, there are multiple ways of thinking about the same thing. Ratio se bhi kar sakte hain, is tarah se bhi kar sakte hain, probabilities. Okay, and that gives you the same thing as well. Let's move on. Question number 4. The diagram shows a pentagon. Well, pentagon is a figure that has 5 sides. This is not a regular pentagon. It was a distorted side, but it has 5 sides and 5 vertices. 1, 2, 3, 4, 5. So this is a pentagon. Okay. All the lengths are in centimeters. Calculate the area of the pentagon. Now we don't know of a direct formula for calculating area of a pentagon. What we can do is we can break it down into multiple shapes. इसको break कर ले multiple shapes. Now there could be many different ways of doing this. आप इसको ये trapezium बना के नीचे वाला rectangle बना सकते हो. That's one possibility. To make it even simpler, what you can do is you can make a triangle here like this. Then you have a triangle and a rectangle. इनके एरियाज फाइंड कर लें, ठीक है? अब रेक्टेंगल जो है उसके एरिया काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 15 into 4, right? So area of this rectangle is just going to be 15 times 4. एक ये रेक्टेंगल आ गया. दूसरे फिगर आपके पास क्या है? ट्रायंगल है. This is the triangle that you have. ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे? This is the right angle triangle, right? Half into base into height. अब हमें ये पता है कि ऊपर वाली जो टोटल लेंथ थी वो 12 थी. ऊपर वाली टोटल लेंथ 12 थी. इतना पार्ट 4 है जो रेक्टेंगल में आ रहा है. बाकी पार्ट कितना होगा उसने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है नॉट टू स्केल. तो आपने फिगर देख के परेशान नहीं होना कि राइट वाला 8 नहीं लग रहा. इट्स नॉट टू स्केल, तो ये आपका 8 होना चाहिए, ठीक है? और ये वर्टिकल लेंथ कितनी होगी? टोटल 15 है, राइट? उसमें से नीचे वाला पार्ट 9 है, ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो बाकी कितना बचा ऊपर? ऊपर वाला पार्ट बस हो जाएगा 6 यूनिट्स, ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास उस तरह से आ जाएगा. रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल करना है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होएगा? 15 into 4. That's the area of the rectangle. Add to that the area of the triangle. That's half into base into height. Half into base, you can say that's 8 into height. That's 6. You can evaluate what this turns out to be. ये दोनों areas को add करेंगे, total area of pentagon आ जाएगा, ठीक है? Let's evaluate this. 60 plus 4 times 6, that's 24. That's going to be 84, right? 84 centimeters square. That's the total area that you get for the pentagon. Okay, now it says find the perimeter of the pentagon. Perimeter क्या होता है? Perimeter is the length of the boundary, the total length of the boundary. Okay, अब हम यहाँ पे इसको erase कर देते हैं जो हमने पहले किया है. Remember, boundary is the outer boundary. दरमियान वाली लाइन नहीं कंसिडर करनी जो हमने खुद बनाई है. Pentagon की outer boundary कंसिडर करनी है सर. Now let me just get rid of this. Now we have these lengths, or in fact let's just keep it. So shading को मैं remove कर देता हूँ वहाँ से. Yeah, ये lengths हमने already लिखी हुई है यहाँ पे. ठीक है, this length is 6. We know that this length is 4 and this length is 8. ठीक है, perimeter क्या होएगा? ये boundary है जो yellow में shade कर रहा हूँ. This is the boundary of the figure. इसकी सारी lengths को बस आपने add कर लेना, ठीक है? अच्छा, we have 15.
plus ऊपर वाली length 12 plus this length 4 plus this length 9. The only length that we do not know about is this slanting length. ठीक है, ये right angle triangle के अंदर आ रही है, right angle triangle का hypotenuse find कर लें. Let's call this h. We can say 8 square equals 8 square plus 6 square. Pythagoras use करते हैं. h की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी. 100 का square root, that's going to be 10. So we add 10 to this as well, and that's going to give you the perimeter. You're working on नीचे show कर देना. It's a 3-mark question, so इसमें working दिखानी पड़ेगी. हम यहाँ पे लिख देते हैं, and we can say perimeter therefore is equal to this. Height आपने निकाली 10, उसको जाके यहाँ पे input कर दिया. Let's just simplify this and see what that turns out to be. 15 plus 12 plus 4 plus 9 plus 10. 27 plus 13 plus 10, that is giving me 50. The perimeter turns out to be 50 in this case. Okay, so this is 50 centimeters. It's a 3-mark question. You have to make sure that you show working. ठीक है, mentally नहीं करना, सिर्फ working दिखानी है. Working के marks होंगे इसमें. Okay, all right, let's move on. Volume of a sphere is given. A sphere has volume 2572 centimeter cube. Find the radius of the sphere. Okay, so volume given है, radius find करना है. You can say V equals 2572. Volume का formula क्या है? 4/3 pi r cube. That is equal to 2572. Right? Radius find कर लें यहाँ से. R cube equals 2572 into 3 divided by 4 pi. That's going to give you something. You have evaluate कर लें, plus का cube root ले लेंगे, and you'll get the result. Okay, 2572 into 3 divided by 4 and pi, that gives us 614.02. इसका cube root ले लें, so power 1/3 on both sides, and that is going to give you the result. Power 0.3333. Let's see what this turns out to be. 8.499. That's 8.50. Okay, and that's your volume. That's your radius. 8.50 centimeters. आपने बस formula में values input की और उससे radius निकाल लिया. This is what it turns out to be. ठीक है, ये evaluate किया calculator से 614.02 आया, क्योंकि लेफ्ट साइड पे r क्यूब था, तो हमने क्यूब रूट ले लिया दोनों साइड्स के ऊपर. क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास 8.50 आ जाएगा. ओके, let's move on. A cuboid has dimensions 2 centimeters by 6 centimeters by 22.5 centimeters. आपको डायग्राम पे नजर आ रहा है. Calculate the surface area of the cuboid. Cuboid के कितने faces होते हैं? 6 faces, right? एक ये फ्रंट वाला फेस है, इसका बैक वाला फेस भी उतना ही होएगा. एक ये साइड वाला फेस है, राइट वाला फेस, लेफ्ट वाला भी उतना ही होएगा. और एक आपकी बेस है इसकी, ये टॉप कंसिडर कर लें. दिस इज द टॉप. जितना टॉप है उतनी ही आपकी बेस भी होगी. ठीक है, तो आपने इन 3 रेक्टेंगल्स को जो मैंने यहाँ पे शेड किए हैं, एरियाज निकालने हैं, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज उनकी ऑपोजिट साइड पे जो फेसेस हैं वो भी काउंट करना है. सो इट्स 2 into, इसका फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली भी होता है, इफ यू रिमेंबर दैट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस breadth into height. Okay, you can either use that formula or just do this logically. 3 rectangles पे निकाले, उनको 2 से multiply कर दो. Okay, so we have 22.5 here. इसकी height कितनी है? You see this is 2, so ये भी 2 आएगा. One rectangle is 22.5 into 2. इसका एरिया ये हो जाएगा. ठीक है, ये येलो वाला रेक्टेंगल है. अच्छा, प्लस लेट्स डू द ग्रीन वन. उसका एरिया कितना हो जाएगा? 6 into 2. Let's do the blue one, ऊपर वाला. उसके लेंथ आपके पास क्या है? This length is 22.5 and the side length is 6. If this is 6, this is also going to be 6. तो उसकी लेंथ क्या होगी? 22.5 and 6. 22.5 into 6. It's a closed cuboid, तो सारे फेसेस ही कंसिडर करने हैं. कोई भी फेस आपको यहाँ पे इग्नोर नहीं करना, सारे फेसेस लेंगे.
इनको टोटल कर लें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 22.5 into 2 plus 6 into 2 plus 22.5 into 6. Multiply that whole thing by 2, and this is giving me 384 is the final result. That's what you write as your final answer here, 384. Okay, let's move on. Now it says a cube of edge x centimeters has the same surface area as the cuboid. So there's another cube that we have now. उस cube का surface area भी यही है जो इस cuboid का है. We need to form an equation in x and solve it to find the length of the edge of the cube, showing your working, of course. Okay. उसने ना भी mention किया होता आपको working show करनी होती है in any case. अच्छा देखिए surface area है cuboid का कितना, cube का कितना 384. Now what does a cube look like? You have a square और सारे faces जो होते हैं वो squares होते हैं इस तरह से. Okay, this is roughly what a cube may look like. इसमें assumption is जो सारी lengths हैं they are equal. It's a very bad cube is it. Let me make one on the side to help you understand this better. So you have one square here and we have another square here. This is what it might look like. ठीक है, क्यूब में क्या स्पेशल होता है, सारी लेंथ इक्वल होती हैं. So this is x, this is x, this is x, सारे edges x हैं. Okay, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, एक फेस का निकाल लें, कोई भी एक फेस, लेट्स से दिस फेस, इसका एरिया निकाल लें. 6 फेसेस हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दें. एक फेस का एरिया कितना होगा, x into x, right? This is x square. So surface area of a cube is 6 into x square. Right? एक फेस का x square है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. What should that be? They're saying इसका वही सरफेस एरिया है जो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है. वो 384 था तो इसका भी 384 होएगा. इसका भी इक्वेट कर दें 384 के साथ. ठीक है, डिवाइड 6 on the other side, that gives you 384 divided by 6 and that is 64. And now you take square root on both sides. In general we always put plus minus whenever we take square roots, but यहाँ पे x is the length. लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे इसकी. x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 8. Okay, so this is 8 centimeters. That's our final answer. Okay, let's move on. Question number 5. Let's have a look at this now. It says a group of students each complete a puzzle. The table shows the time t seconds each student took to complete the puzzle. Find the number of students who took 2 minutes 20 seconds or less to complete the puzzle. Okay, अब देखिए ऊपर जो टाइम दिया हुआ है ना उसने सेकंड्स में दिया हुआ है. 2 minutes 20 seconds का क्या मतलब है, 2 minutes is 120 seconds, 120 plus 20 that's 140 seconds. उसने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने फाइंड करने हैं जिन्होंने 140 सेकंड से कम टाइम स्पेंड किया. अब देखिए ये टेबल को कैसे आपने समझना है. There were 13 students who took between 80 and 120 seconds. There were 26 students who took between 120 and 140 and so on. उसने क्या कहा है, 140 seconds or less, यानी 140 या उससे कम. तो बस दो केसेस आते हैं, ये दोनों वैल्यूज इसमें आप कंसिडर करेंगे. 13 is also less, 13 जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी आपका टाइम लेस देन 140 है और 26 में भी लेस देन 140 है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 13 plus 26, that gives you 39. And that's your final answer here. So this, you say this is 39. Okay. Part 2. It says calculate an estimate of the mean time taken in seconds to complete the puzzle. Okay, a mean find करना है. It's a 3-mark question. A mean का आपके पास एक standard formula होता है. What does that formula look like? X bar equals sigma fx over sigma f. Okay, तो आपको क्या करना है, इस टेबल में एक रो ऐड कर लें. अब यहाँ पे वेरिएबल x की बजाय उसने t दिया हुआ है तो आप इसको ft लिख सकते हैं if you want. Yeah, as it is written, that's okay. आप बस ये कह लें कि this is x and this is f, let's say. Okay, add another row to the table, fx. अब यहाँ पे इंटरवल्स हैं. इंटरवल्स जब दिए होते हैं तो हम मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. तो x हम क्या कहेंगे,
इनके मिड पॉइंट्स होंगे इंटरवल्स के 80 और 120 का मिड पॉइंट इज 100, 120 और 140 का मिड पॉइंट, इन दोनों को ऐड करें, राइट, और 2 से डिवाइड कर दें, 120 plus 140 divided by 2. Let's see what that gives us. That's 130. Similarly for the other ones, 140 or 150 का मिड पॉइंट क्या होगा, 145. Then we have 150 or 240 का मिड पॉइंट. Add those two numbers, 150 plus 240, divide by that by 2, that gives you 195. ये वैल्यूज आ गई आपके पास. अब आपने क्या करना है, टेबल के अंदर एक रो ऐड कर लेनी है. ओके, टेबल के अंदर एक और रो ऐड कर लें, which is f times x, यानी ये x और ये फ्रीक्वेंसी आप मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, 100 into 13 that gives us 1300, 130 into 26 that is 3380, 27 into 145 that is 3915, and then 24 into 195 that is 4680. अब आपने क्या करना है, इन सारे numbers को add कर लेना है. That is going to be sigma fx. Okay, add all of these numbers, 1300 plus 3380 plus 3915 plus 4680, and this is giving me 13265. This is sigma fx. All right, अब ये formula में जाके input कर दें, 13265 divided by sigma f, यानी सारी frequencies का sum. ये उसने ऊपर नहीं दिया हुआ अलग से, या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो आप उसको टोटल कर लें इन सारे नंबर्स को. ये देख लें क्या आता है, 13 plus 26 plus 27 plus 24, and that is giving me 90. Frequencies का सम हमारे पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है. That is going to be our denominator here, and we would get the mean from this. Okay, so that's 13265 divided by 90, and that turns out to be 147.4. And that's the mean that we were looking for. Okay, उसने seconds में पूछा था, तो ये seconds में आ रहा है because हम seconds में ही values use कर रहे हैं. ठीक है, so it's 147.4 that I am getting here. Okay, let's confirm this is the 1300 plus 26 into 130 plus 145 into 27 plus 195 into 24. Okay, so there's something wrong here. 1300 plus 3380 plus 3915 plus 4680. अच्छा, ऐड करते हैं, मैंने यहाँ पे नंबर है गलत लिख दिया. This is not 265, this is actually 275. ऐड करके 275 आता है यहाँ पे. So this becomes 275 then. Now 13275 divided by 90, this gives me 147.5. See, 147.5 आ रहे हैं. ठीक है, if I wrote 147.4 there with that incorrect working, I would have lost 1 mark there because वो एक careless error हो गया वहाँ पे. ठीक है, that's the second part here. Let's move on. Part B here. It says a group of adults also completed this puzzle. Now, a cumulative frequency curve for their times is shown here in this diagram. अच्छा, ऊपर क्या था? ऊपर a group of students था. Now we have a group of adults, okay, who are not students, okay. We need to use the cumulative frequency diagram to complete the frequency table. अब ये एक different data है, इस frequency diagram को अपने cumulative frequency diagram को अपने use करना है to complete this table. Okay, 50 to 100 उसने कहा है there are 8 people. So you can confirm that here. 100 पे देखें क्या नंबर आ रहा है आपके पास, ये scale देखें vertical axis पे. 10 units represent 10 boxes represent 10 small boxes represent 20 units. So one small box represents 2 units. Okay, तो 100 पे देखें आपके पास क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, this is 8, इसलिए यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, 8. Okay, so this number is 8 here. 100 to 150, 150 पे आप देखें वैल्यू क्या आती है. 150 पे the value that we have here is right in between 20 and 40, that's 30. अब 30 जो है cumulative frequency है इस point के ऊपर, कि 150 से कम total number कितना है, 30. What about the number between 100 and 150? ये आपको चाहिए यहाँ पे. तो 30 में से आप ये 8 माइनस करेंगे, 30 में से 8 माइनस करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 22. This number here is going to be 22.
ओके अच्छा, उसके बाद 200 पे देखें क्या वैल्यू आती है। 200 पे we're getting this value here. Left पर आए, this is what we're getting here. This is 66. Again, 66 is the cumulative frequency up to 200. 66 में से आपको ये 30 minus करना पड़ेगा to get the number that is between 150 and 200. Okay, 66 minus 30, that gives us 36. Next 250 पे आपको देखना है। 250 पे ऊपर जाएं, आपके पास क्या आता है। This is the number that I'm getting here. Let's go to the left side, and this turns out to be 110 plus 2. That's 112. Again, 112 minus 66. You can see what that turns out to be. 112 minus 66. That is 46. This number here should be 46. Okay. And then finally, we see what the value at 300 is. Last value, that's 120. 120 में से आप minus कर दें 112. That turns out to be 8. Now, just to confirm that your values are correct, आपकी cumulative frequency total कितनी है? 120, right? तो इन सारे numbers को add करके आपके पास 120 आना चाहिए। तो आप confirm कर सकते हैं, इन सारे numbers को add करें, the result should be 120. If it's not 120, that means you might have done something wrong. You might need to recheck your answer. Okay. Now the second part says, use the cumulative frequency diagram to find an estimate of the median. Median कैसे estimate करते हैं हम इस data से? Total frequency कितनी है? 120. Median कहाँ पर आएगा? n over 2 के ऊपर, right? 120 का half, that's 60. 60th value जो होगी, that is going to be the median. 60 पे आप जाके अब देखेंगे horizontal axis पे आपको क्या value मिलती है। 60 is not the median, remember. 60 पे जो corresponding value of the variable आपके पास आती है यहाँ पे, ये आपने ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। और आप ये देखेंगे क्या आता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें, 10 यूनिट्स रिप्रेजेंट 50 यूनिट्स, 10 बॉक्सेस रिप्रेजेंट 50 यूनिट्स। तो एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट करे, एक स्मॉल बॉक्स 5 यूनिट्स। तो अब देखें 200 से एक बॉक्स लेफ्ट साइड पर है, that's 200 minus 5, that's going to be 195. This number is 195, and that's your median. You write that here, you say this is 195. The median time is 195 seconds. Okay, now it says 55% of the adults took between 125 seconds and k seconds to complete the puzzle. Use the cumulative frequency diagram to find the value of k. अच्छा, पहले तो देख लें 55% ये नंबर क्या बनता है। टोटल कितने थे? 120. 55% of 120, what is that going to be? 55 over 100 into 120. What do we get for that? Let's evaluate that. 55 into 120 divided by 100, that's 66. So there are 66 adults who are between 125 seconds and k seconds. अब k की वैल्यू फिगर आउट करनी है। अच्छा, देखते हैं 125 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है डायग्राम के ऊपर। 125 is here. 125 के corresponding we have 18 here. So there are 18 adults who took less than or equal to 125 seconds. 18 यहाँ पर है। अब 125, so 18 है जो 125 से लेस में, right? So less than or equal to 125 हमारे पास 18 लोग हैं। अब 125 और k के दरमियान में कितने लोग आने चाहिए? 66. तो इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन और इक्वल टू k कितने लोग होने चाहिए हमारे पास? k के लेफ्ट साइड पे कितने लोग होने चाहिए? 18 में आप ये 66 और ऐड कर दें, बिकॉज दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में 66 आने चाहिए ना। तो 18 plus 66, what's that? That is 84. k या उससे कम जो वैल्यूज होनी चाहिए वो 84 होनी चाहिए। तो आप देखें वर्टिकल एक्सिस पे 18 में 66 ऐड करें, 84 आपके पास आता है। 84 इज राइट हियर। 84 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, जाके देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास क्या टाइम आता है। This is what I'm getting here. Remember, 1 unit represents 5. One box represents 5 units here. So 200 से 3 boxes right side पे है. This is going to be 215. Okay. तो 125 और
215 के दरमियान में ये 66 लोग आ रहे हैं 18 से लेकर 84 तक। ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी फिर? We would say this is 215. That's our final answer here. Okay, I hope that makes sense. That was question number 5. Yeah, 5 from this paper. Okay, let's move on to question number 6. Okay, it says the line y equals x plus 2 is drawn on the grid. You can see that line here, y equals x plus 2. On the grid, draw the line x plus 2y equals 7. This is a straight line. Straight line कैसे draw करते हैं? You take any 2 points. एक x की value डालें, corresponding value y निकालें. For example, let's input x equals 0. x equals 0 डालते हैं आपके पास, तो क्या आता है? y equals 7/2. That's 3.5. 0 पे 3.5 value आती है. This is 1 point. Okay. एक x की वैल्यू कोई और इनपुट कर दें. Let's say x equals 3. 3 इनपुट करते हैं तो 3 उस साइड पे जाता है. 7 minus 3 4 आता है. 4 divided by 2, that's going to give you 2. 3 पे y की वैल्यू 2 आती है. So 3 and 2, this is another point that we're getting. 2 points आ गए. 2 points से आप लाइन बना सकते हैं. This is what your line is going to look like. To confirm, you can take another point as well. Often that's useful to confirm कि आपकी working ठीक है. आप एक और point ले सकते हैं. For example, यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 0 इनपुट करते हैं, x की वैल्यू 7 आती है. There's another point that we have here, right? y की वैल्यू अगर 0 इनपुट कर दें तो x 7 आता है, right? This would be another point that you could use here, 7 0. So that's the line that we have. Okay, that confirms that this line is correct. ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है, इसको लेबल कर देंगे. That's better. So this is x plus 2y equals 7. That's the line that we have to draw here. Now part B says use a graph to find the solution of these simultaneous equations. Which simultaneous equations? एक तो थी y equals x plus 2. ये वही लाइन है यहाँ पे, इस लाइन ड्रॉ की हुई है. दूसरी लाइन कौन सी है जो आपने अभी ड्रॉ की है? साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास? जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट यू सी ऑन द ग्राफ हियर? दिस इज द पॉइंट. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 and 3. 1 on the horizontal axis, 3 on the vertical axis. We'll say x equals 1 and y equals 3. That's your final answer here. Okay, let's move on. Part C. The region R is defined by these 3 inequalities. Shade and label the region R. Now, how are we going to think about this? इस तरह के केसेस में जब भी inequality के अंदर y आ जाए ना, तो आपने y को एक साइड पे ले जाना है, दूसरी साइड बाकी सब चीजें दूसरी साइड पे ले जानी है. अब देखें, ये इक्वेशन तो आपने ड्रॉ की हुई है ना. ये इक्वेशन आपने ड्रॉ की हुई है y equals x plus 2. This is already there. ये इक्वेशन भी आपने ड्रॉ की हुई है x plus 2y equals 7. These two lines are already there. ये जो थर्ड चीज है x less than or equal to 5, पहले तो आप क्या करें, इसको इक्वेशन लिखें, x equals 5 और लाइन ड्रॉ कर दें वहां पे. x equals 5 लाइन वहां पे ड्रॉ कर दें पहले जाके. Let's do that. x equals 5, x equals something. ये लाइन जो होती है वर्टिकल लाइन होती है. So where is that going to be? यहाँ पे आके हमारे पास एक वर्टिकल लाइन इस तरह से बन जाएगी. x equals 5 के ऊपर. This is how it's going to look like. ठीक है, this is x equals 5. Okay. अब आपने क्या करना है? जो पहली दो इक्वेशंस हैं इनको पहले आपने रीअरेंज कर लेना है. y ऑलरेडी एक साइड पे है इसमें, तो दिस इज ओके. y इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 2. इसका मतलब ये है, लेस देन का मतलब है या तो आप लेफ्ट साइड पे हैं या आप नीचे हैं, राइट? इनफैक्ट y जब सब्जेक्ट पे आप कहेंगे नीचे हैं, तो लेस देन का मतलब है इस लाइन के आपको नीचे होना चाहिए. ओके, सो यू शुड बी बिलो दिस लाइन. लेस देन का मतलब है यू शुड बी बिलो दिस लाइन. जब y के टर्म्स में आ रहे हैं, यू हैव टू बी बिलो दिस लाइन. y इक्वल x प्लस 2 के नीचे होंगे. y इक्वल x प्लस 2 वाली कौन सी लाइन है? ये जो उसने ऑलरेडी दी हुई थी यहाँ पे, y इक्वल x प्लस 2. यू हैव टू बी बिलो दिस लाइन. दैट मीन्स यू हैव टू बी इन दिस रीजन, इससे नीचे. ओके, ये कहीं भी हो सकता है, हम बाद में देखते हैं. इससे नीचे होना है, ठीक है? दैट्स वन थिंग. अच्छा, दूसरी लाइन क्या है? x plus 2y greater than or equal to 7. The first thing you have to do here is you have to make y the subject. y को एक साइड पे लेकर आना है, फिर सोचना है इसके बाद. ठीक है, y is greater than or equal to 7 minus x over 2. ठीक है, y एक साइड पर है, पॉजिटिव होना चाहिए. आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते थे. इफ यू
अंडरस्टैंड दैट y ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको आप डायरेक्टली सोच सकते ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, लेकिन अगर y नेगेटिव आ रहा होता आपको इसको दूसरी साइड पे लेकर जाना पड़ता. बट in this case, if you make y the subject, that's going to make things pretty clear. अब ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इसका मतलब है ये जो लाइन थी आपके पास दूसरी वाली, यू हैव टू बी अबव दिस लाइन. जो दूसरी वाली लाइन थी ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इससे आपको ऊपर होना है. ठीक है, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, यू हैव टू बी अबव दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर होंगे. ठीक है, अच्छा. देन द थर्ड लाइन इज x लेस देन और इक्वल टू 5. यहाँ पे y नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम कहते हैं लेफ्ट राइट. लेस देन और इक्वल टू 5 का मतलब है यू हैव टू बी टू द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन, राइट. x इक्वल 5 जो लाइन है उसके लेफ्ट साइड पर होंगे. डायग्राम जाके देखें, इसके हम क्या होंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर. अब देख लें तीनों कंडीशंस कहाँ पे मीट होती हैं. y इक्वल्स x प्लस 2 के नीचे, ग्रीन वाली लाइन के ऊपर और ऑरेंज वाली लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर, तीनों कंडीशन मीट होती हैं दरमियान वाले रीजन के अंदर. सो द शेडिंग दैट यू विल डू वुड बी इन दिस रीजन. This is the region that satisfies all of those conditions. ये आप रीजन शेड कर दोगे, उसने कहा है शायद लेबल करें इसको. Yeah, shade and label the region R. You would label this region. You would say this region is region R. Okay, that's what you do in this part. Now it says the point Z is in the region R. Okay, region R के अंदर एक पॉइंट है, उसको उसने नाम दे दिया पॉइंट C. The x coordinate and the y coordinate of the point Z are both integers. X भी integer है, y भी integer है. Okay, इस रीजन के अंदर, यानी कि ये पॉइंट्स कहां पर होंगे, ये मैं 1 और 3 यहां से रिमूव कर दो, बाहर लग रहते हैं. पॉइंट वाज 1 and 3. येलो रीजन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जी जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो इंटीजर है. इसका मतलब है कि इन वर्टिसेस पे हो सकते हैं, जो कॉर्नर्स के ऊपर, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, इन पॉइंट्स पे हो सकते हैं. पॉइंट जी इनमें से कोई पॉइंट हो सकता है जो कॉर्नर्स के ऊपर आ रहे हैं. ठीक है, अच्छा, just change my points. Okay, it says point Z does not lie. इसका मतलब है जो लाइंस है ना उसके ऊपर, लाइन के ऊपर नहीं लाई करते, इसके ऊपर लाइन के ऊपर नहीं लाई करते, यानी कि ये वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है, बाउंड्री के ऊपर नहीं है, दरमियान में है, कहीं पे अंदर है उसके. अच्छा ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस ऑफ द पॉइंट सी. अच्छा, अब देख लें पॉइंट सी कहाँ कहाँ पे हो सकता है. 1 2 3 4 5 6 7. These are the 7 possible positions. बाकी पॉइंट्स बाउंड्री के ऊपर होंगे. 7 पॉइंट्स हैं जो इस रीजन के अंदर आ रहे हैं, जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर होंगे. So what do you do then? You say this is 7. There are 7 possible positions. ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है the y coordinate of the point Z is 1 more than its x coordinate. Write down all the possible coordinates of the point Z. अच्छा देखें, y coordinate is 1 more than the x coordinate. For example, अगर y coordinate 3 है तो x coordinate 2 होगा. This is one possible point, right? अगर वो रीजन के अंदर लाई करता है, it's going to be something like this कि x coordinate जो भी है उससे 1 ज्यादा जो है y coordinate होना चाहिए. हमने 7 पॉइंट्स मार्क किए थे वहां पे, उनमें से देखें कहां पे ये कंडीशन मीट होती है. y coordinate should be 1 more than its x coordinate. Okay, so one possible point is here. इसमें x coordinate 2 है, y 3 है, right? This is one possibility. फिर आप इसी तरह से डायगनली देखते जाएंगे, इस तरह चलते रहेंगे, बिकॉज इस डायगनल के ऊपर क्या होगा, 1 1 का डिफरेंस आ रहा होगा, 1 का डिफरेंस आ रहा होगा बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स. तो so another point here is going to be when the x coordinate is 3 and the y coordinate is 4. That's another point. Another possibility is when the x coordinate is 4 and the y coordinate is 5. These are the 3 points that we have that satisfy that condition, जहाँ पे y coordinate 1 unit ज़्यादा है x coordinate से. So what are these 3 points now? Let's write them down. 2 3, that's one point. And then the other points are 3 4 and 4 5. Let's write them down here. 3 4 and 4 5. These are the 3 possible points in that shaded region that satisfy the given conditions. कि coordinates integer होने चाहिए
और y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 1 यूनिट ज्यादा होना चाहिए. Okay, let's move on. Question number 7. Okay, how many questions do we have in total? Just check that. Okay, so they're not too many. 10. Okay, we are already at question number 7. Okay, let's do this now. It says the diagram shows the speed time graph for a cyclist journey. Speed time graph दिया हुआ है, that means speed is on the vertical axis, time is on the horizontal axis. Calculate the acceleration of the cyclist during the first 8 seconds. Speed time graph है, acceleration निकालनी है. Remember speed time graph में आपकी acceleration क्या होती है? It comes from the gradient of the graph, right? First 8 seconds में gradient क्या है? 1.00 है. दूसरा point क्या है? 86. Gradient निकाल लें इसका. 6 minus 0 over 8 minus 0. That gives you 3/4 or 0.75. Acceleration is 0.75 meters per second square. Okay. Describe the motion of the cyclist between t equals 8 and t equals 90. 8 और 90 के दरम्यान में देखें, ये horizontal line है. It's a speed time graph. Vertical axis speed represent कर रहा है. Speed क्या है? 6. तो 6 की speed पे ही move करता जा रहा है इस time के अंदर. तो आप क्या कह सकते हैं? You can say the cyclist is moving at a constant speed. और वो constant speed आप mention कर दें. वो क्या constant speed है? Constant speed is 6 meters per second. इस speed पे वो move कर रहा है. ठीक है? अगर ये distance time graph होता और उसमें horizontal line होती, उसका मतलब होता कि ये rest पे है. इसका मतलब rest पे नहीं है. ये तो speed constant है और इस value पे constant है 6 meters per second पर. ठीक है? All right. Another possibility could be क्योंकि ये horizontal है, speed constant है, you could also say that the acceleration is 0, right? Acceleration change नहीं हो, speed change नहीं हो रही तो acceleration 0 है, gradient 0 है, right? तो acceleration 0 होगी. Now it says the total distance traveled by the cyclist during the journey is 558 meters. Find the value of t. T is this point here where the cyclist completes his or her journey. T find करना है. अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से? इट्स द एरिया अंडर द ग्राफ, राइट? ये पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. ये क्या फिगर है? इट्स अ ट्रेपीजियम, राइट? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज कर लें. यू कैन से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शुड बी इक्वल टू 558. लेट्स राइट दैट डाउन हियर. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to 558. What's the formula for the area of trapezium? Half into sum of parallel sides into height. What are the parallel sides here? This is the parallel. This is one side. This is another side. नीचे वाली side क्या है? T units plus. What about this length? 90 minus 8. That is 82. T plus 82 into height. Height क्या है trapezium की? 6 units. Right? So this multiplied by 6. This should equal 558. यहाँ से आप T की value निकाल लें. 2 and 6 get cancelled. We have 3 here. 3 goes to the other side. 558 over 3 हो जाएगा. So we have T plus 82 equals 558 divided by 3. That's 186. 186 minus 82, that's going to give us 104. So the value of T that we get here is 104. That's what we were looking for. T equals 104. Okay? Now it says convert 6 meters per second into kilometers per hour. अगर तो आपको डायरेक्टली याद है, कुछ लोगों ने याद किया होता है, राइट, के मीटर्स पर सेकंड और किलोमीटर्स पर आवर की कन्वर्जन क्या है, यू कैन जस्ट डू दैट डायरेक्टली एंड दैट्स ओके. डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई कर दें. Otherwise, if you don't remember that, you can think of it like this. This is 6 meters per second. Meters को किस में कन्वर्ट करना है आपने? Meters को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में. मीटर टू किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर इज 1000 meters. तो मीटर को उसमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/1000. तो
do it just step by step. इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, m डिवाइडेड बाय s है, राइट? मीटर्स पर सेकंड है ना। अब मीटर्स को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा, 6/1000 किलोमीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सेकंड। सेकंड्स को आपने कन्वर्ट करना है आवर्स में, वो कैसे होएगा, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 60 इज गोइंग टू गिव यू 1 मिनट। मिनट को फिर 60 से और डिवाइड करेंगे, वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3600 आवर्स। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कर दें 6/1000 into 3600 and that gives you 21.6 kilometers per hour. Now this is one way of doing this. A lot of people just memorize this, and that's perfectly okay. आप ये conversion याद रख सकते हैं। क्या conversion? 1 meters per second is 3.6 kilometers per hour. If you remember this, you can use this directly. How? 1 meters per second is 3.6 kilometers per hour. तो 6 meters per second कितना हो जाएगा? या आप रेशियो से फाइंड कर लें, 6 into 3.6. 6 into 3.6, that gives you 21.6 kilometers per hour. You can do this conversion like this if you remember this relation. 1 meter per second is 3.6 kilometers per hour. ये आप याद रख लें, बेशक डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, let's move on. 7B. A car travels 252 kilometers correct to the nearest kilometer. Okay, nearest kilometer. The time taken to travel this distance is 4.2 hours, correct to the nearest 0.1 hour. Calculate the upper bound for the average speed of the car. अच्छा, now distance है nearest kilometer के ऊपर, इसका मतलब क्या, ये actual distance क्या होगा, 352 है ना, तो 0.5 कम है इससे, 0.5 ज्यादा। Actual distance is actually between 351.5 and 352.5. This is what the actual distance is going to be, because इसके दरम्यान में कोई भी वैल्यू थी जो उसने राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, 352 कर दिया। सिमिलरली ये जो आपके पास टाइम आ रहा है टू द नियर 0.1 आवर, इसका मतलब क्या है, ये 4.2 तक लिखा हुआ है। आप क्या करोगे, 0.1 को 2 से डिवाइड करो, दैट गिव्स यू 0.05। 0.05 इसमें ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4.15। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4.25। The actual time is between these two numbers, 4.15 and 4.25. Actual distance इनके दरमियान में है और actual time जो है वो इनके दरमियान में है। अब आपने करना क्या है, अपर बाउंड फाइंड करनी है एवरेज स्पीड की। डोंट जस्ट डू दिस कि दोनों की अपर बाउंड डिवाइड कर दें, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड divided by the time taken, right? That's what average speed is. Total distance कितना है, 352, time is 4.2. However, we are looking for the upper bound of the average speed. Upper bound of average speed के लिए हम क्या करेंगे, यानी हमें चाहिए maximum possible value of the speed. Maximum speed कैसे आएगी, जब distance की हम maximum value यूज करेंगे, जो न्यूमरेटर में नंबर है वो बड़ा होना चाहिए, फिर हमारे पास ये ओवरऑल नंबर बड़ा आएगा। और जो डिनोमिनेटर में बड़ा है वो जितना छोटा होएगा उतना बेहतर है। डिनोमिनेटर की हम छोटी वैल्यू यूज करेंगे, राइट? फ्रैक्शन को अगर हमने मैक्सिमाइज करना है, न्यूमरेटर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर वाला नंबर छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, दैट्स 352.5, और टाइम की छोटी वाली वैल्यू लेंगे ताकि हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बड़ा आ रहा हो। ओके, न्यूमरेटर की बड़ी वैल्यू और डिनोमिनेटर की छोटी वैल्यू। And now just evaluate this and see what that turns out to be. 352.5 divided by 4.15. And that gives you 84.94 kilometers per hour. उसने कोई accuracy तो नहीं कहा हुआ यहाँ पे, नहीं कहा हुआ. You can leave it like this. You can see this is 84.94.
या आप इसको राउंड ऑफ करके 84.9 भी लिख सकते हैं. दैट्स द अपर बाउंड ऑफ द स्पीड दैट वी गेट फ्रॉम दिस. ठीक है, ये स्पीड की अपर बाउंड है. अगर आपने लोअर बाउंड फाउंड करनी होती, जस्ट एज एन एग्जांपल, उसमें क्या करते हैं, डिस्टेंस की छोटी वैल्यू लेते हैं, न्यूमरेटर को आपको छोटा करना होता, और डिनोमिनेटर की बड़ी वैल्यू लेते हैं, टाइम की बड़ी वैल्यू लेते हैं. ये दोनों वैल्यूज लेते हैं अगर आपको मिनिमम एवरेज स्पीड चाहिए होती, लोअर बाउंड ऑफ द एवरेज स्पीड चाहिए होती. दैट्स व्हाट यू वुड डू इन दैट केस. ओके, लेट्स मूव ऑन. Question number 8. We have this matrix A that satisfies the following equation. We need to find the matrix A. How do we do this? What we can do is we can take 3A to the other side. इसको positive करने के लिए. That's one possibility, right? 3A को मैं right side पे ले जाता हूँ, और जो right side वाला matrix है इसको left side पे ले आते हैं. What does that give us? 3A equals 2, 5, 3, 2 minus 5 minus 4, 3 minus 1. All you have to do now is subtract corresponding components. Corresponding components को आप subtract कर दें. 2 minus 5. 2 minus 5 is going to be minus 3. 3 minus 3 is 0. 5 minus minus 4, that's 5 plus 4, that's 9. 2 minus minus 1, that's 2 plus 1, that is 3. अब क्या करें, 3 जाके दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें. मतलब आप मैट्रिक्स को डिवाइड तो नहीं करते, आप इस तरह से कह सकते हैं कि 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ इसके. ठीक है, सो यहाँ से आप इसको रिमूव करके आप कहें यहाँ पे a रह गया, उधर 1/3 आपने मल्टीप्लाई कर दिया. 1/3 अब क्या होगा, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. So what do we get from that? Minus 3/3, that's minus 1. 0/3 is 0. 9/3 is 3. 3/3 is 1. So the final result that we get from this is minus 1, 0, 3, and 1. That's the result that we get from this. Let's look at part B now. B एक matrix है that is 2, 4, 2 minus 2, 4, and P. We know that the determinant of B is to find the value of B and hence write down B inverse. Okay, now how do we think about this? Determinant of B is given to be 2. आपने P find करना है. Determinant कैसे निकालते हैं? This diagonal divided by the other, minus the other diagonal, right? So determinant of B is equal to 2. What we do for that is 2 into P minus 2 into 4, that should equal 2. Simplify कर लें इसको. 2P plus 8 equals 2, and the value of P turns out to be minus 6/2, which is minus 3. So P is equal to minus 3. ठीक है, एक आपको ये निकालना था. जब ये आपने फिगर आउट कर लिया, आपको इनवर्स लिखना है. इनवर्स क्या होता है? B inverse is 1 over the determinant of B into adjoint of B. So it's 1 over minus 3, right? No, sorry, determinant is not minus 3, determinant is 2, 1 over 2 into adjoint of B. Adjoint में क्या करते हैं? इस diagonal पे आपने values interchange कर लेनी है. So this matrix now is 2, minus 2, 4, and minus 3. इस diagonal में values interchange कर लें. So you have minus 3 here and 2 here. और दूसरे diagonal के ऊपर क्या करेंगे, signs reverse कर लेंगे. minus 2 plus 2 हो जाएगा और 4 minus 4 हो जाएगा. And this is the inverse that we get. You can leave it like this and that's okay. आपको 1/2 अंदर multiply करना जरूरी नहीं होगा. You can leave it like this and that's perfectly okay. That's your inverse. Okay? यहाँ पे लिख लें 1/2 into minus 3 into minus 3 and 2 and 2 and minus 4. That's the inverse. Okay, let's move on. Now we have transformations. The diagram shows shape A and shape B. Describe fully this single transformation that maps shape A onto shape B. A से B पे जाने. अच्छा देखें, how do you figure this out? आपका size change हो रहा है फिगर का? नहीं change हो रहा, right? और वो ऐसे ही लग रहा है कि वो shift हो गई है, बस यहाँ से उठा के आपने उसको ऊपर रख दिया. So this looks like translation. आपने इस translation को describe करना है essentially. ठीक है, आप कोई भी एक vertex उठाएं. Let's take this vertex for instance.
ये ऊपर चला गया इस पॉइंट के ऊपर. Now, how many units do you have to move horizontally and vertically? Horizontally, you have to go 1, 2, 3, 4, 4 units left, and then 1, 2, 3, 3 units up. So this is a translation. जिसका matrix क्या होएगा? It's a translation with matrix -4 and +3. This is what we have. Okay. The second part says the transformation represented by the matrix -2, 0, 0, -2 maps shape A onto shape C. Draw and label the shape C. Okay. Now, one possibility is कि आप इसका matrix figure out कर लें, right? कि ये matrix क्या है, किस transformation का matrix है ये. That's one possibility. और फिर आप वो transformation बस apply कर दें उसके ऊपर. The other possibility is आप बस उसके vertices use करें और multiplication कर लें और आपके पास इसका result आ जाएगा. ठीक है? So that's your choice, however you want to do it. आपके पास यहाँ पे 4 vertices हैं, multiplication से भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी कर सकते हैं. अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अगर याद हो, ये कौन सा मैट्रिक्स आपको लग रहा है? रिमेंबर बाकी सारे मैट्रिक्स पे तो 1 1 आ रहे होते थे, राइट? इसमें जब कोई और नंबर आ जाता है, there's only one possibility and this is enlargement basically, right? enlargement का मैट्रिक्स क्या होता था? k 0 0 k. आप उसको फिगर आउट भी कर सकते हैं वो डायग्राम बना के. So if you're familiar with that, you can do that. k 0 0 k, ये वो वाला फॉर्म है. k की जगह पे क्या आ रहा है? -2. So this is actually an enlargement with the scale factor -2. So ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, this is enlargement with scale factor -2. Considering this, now you can draw that transformed figure. आप ये matrix से भी कर सकते हैं. Matrix multiplication से आप vertices लिखेंगे सारे, उसको multiply कर देंगे इस matrix के साथ, और जो result आएगा वो आपको coordinates मिल जाएंगे, उनको plot कर देंगे. That's one possibility. But it's much quicker if you're able to figure it out. ये कौन सी transformation है उस matrix को देखकर. This is enlargement with scale factor -2. Now you can do that enlargement directly on the diagram. Remember, matrix वाला जब भी आपके पास आएगा, इसमें जो enlargement में आपका center of enlargement क्या होता है? Center of enlargement is always going to be the origin. Center of enlargement is 0 0. Okay, 0 0 पे हम enlargement करते हैं with scale factor -2. Now, how is that going to work? किसको ट्रांसफॉर्म करना है? A को करना, right? तो A की ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? ओरिजिन से -2 स्केल फैक्टर पे. Where does this point go? 1 unit ऊपर है, ये चला जाएगा 2 units on the other side. That's going to be here. Okay, let me mark these points. Let's say this is X, Y, or let's say PQRS. So this is PQRS. We have R dash here. ये वाला पॉइंट ऊपर Q, ये कहाँ जाएगा? 2 units ऊपर है अभी, तो ये चला जाएगा 4 units on the other side. In fact, like this. Origin से देखें, it's like this. जितना distance जितना है इस साइड पे है, उससे डबल डिस्टेंस उस साइड के ऊपर. स्केल फैक्टर नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइड पे जाएगा और डिस्टेंस का डबल हो जाएगा. So it's going to be here. Q dash is going to be right here. Okay, यहाँ पर आ गया. अच्छा, what else? S देखें, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उससे डबल दूसरी साइड के ऊपर, यहाँ पे और फिर इधर. This is going to be S dash, right? This is another point that we have. और फिर आपके पास क्या है? P देखें डायगोनली आपके पास ये 2 units आ रहे हैं. You go 2 units here and 2 more units here, and that gives you this point. This is P dash. ये आपके पास आपने सारे वो coordinates mark कर दिए, and now you can just join these points, and that's going to give you the figure that you're looking for. Okay, इन points को हम join कर देते हैं, and we see what we get from that. See if I can use the line tool here. Oh yeah, it's working.
P to Q. Then this line, we have this line here, and this line here. This is the shape that we get from this. तो ये आपने देख लिया, -2 scale factor के साथ enlargement कर ली with center of enlargement at the origin. ठीक है, this is the result that we get from this. उसने कहा था ड्रॉ करनी है और लेबल भी करना है, लेबल करना है इसको, तो आप इसको कह देंगे this shape is shape C. Okay, इसके अंदर लिखते हैं या बाहर लिख दें, this is C. All right, let's move on. Question number 9. PQ is a vertical pole. A rope is attached from the top of the pole P to a point on the ground R. PQ is vertical, so this is 3 dimensions, keep that in mind. Q is the foot of the perpendicular. Q is the foot of the perpendicular, okay? तो Q पे जो angles बन रहे होंगे वो 90 degrees बन रहे होंगे. उसने लेंस दी हुई है, PR दिया हुआ 20, PRQ is 11 and RQP is 90. That angle is 90 of course because P is the top of the pole, Q, yeah. So P, R and Q are on horizontal ground, so 90 degrees angle आपको बस बन रहा है. So that PQ equals 16.70, correct to 2 decimal places. Okay, how do we do that? Simple Pythagoras, let's say, so it's a right angle triangle, we say 20 squared equals 11 squared plus PQ squared. What does that give us? PQ squared equals 20 square minus 11 square. Let's see what that turns out to be. 279, take square root, and that gives us 16.703. So 2 decimal places पे क्या बन जाएगा? 16.70. Okay, that's all that you have to do. That you have to do here. Pythagoras use के आपके पास ये आ गया. Now part B says a second rope is now attached from P to a point S. Okay, देखिए पहले वाली फिगर आपको उसने यहाँ पे शो कर दिया साइड में. ठीक है, ये पहले वाली फिगर है, राइट एंगल ट्राइंगल है उसी तरह से. P की लेंथ आपने निकाल ली है, P की लेंथ कितनी आ रही है? 16.70. This is 16.7. There's a second rope that's attached from P to a point S. ये P vertical था, point S आपके पास, इसके साथ आपने एक rope attach कर दिया. और अब क्या हो रहा है? उसने कहा है PQS जो एंगल है, PQS, this is also 90, of course, because S भी ground के ऊपर है, Q के ऊपर आपका ये vertical pole है, तो Q पर जितने भी angles बनेंगे horizontal ground के साथ वो 90 degrees ही होंगे. तो PQS angle is 90 as well. RS is 30. Okay, the angle of elevation of P from S is 36 degrees. Angle of elevation of P from S, यानी S पे खड़े होके, S पे खड़े होके जब आप ऊपर देख रहे हो P की तरफ, तो एंगल कितना बनता है? 36. ग्राउंड के साथ, ग्राउंड क्या है? SQ यहाँ पे, राइट? SQP is a right angle triangle like this. It's a right angle triangle, right? अगर हम इसको राइट साइड पे ड्रॉ कर लें, it looks something like this. ये आपके पास इस तरह की एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, where this is S and this is P and this is Q. Angle of elevation of P from S, that's this angle here. This is 36 degrees. That's what they've told us. Okay, we need to calculate RQS. RQS, that means we are looking for this angle. ये angle figure out करना है इसी तरह से. अब ये angle figure out करने के लिए हम triangle use कर सकते हैं RQS. वो तो right angle triangle नहीं है. उसमें हमें क्या पता है? उसमें हमें पता है एक side 11, एक और side that's 30. अगर हम किसी तरह से QS भी फाइंड कर लें, अगर हम QS लेंथ भी फाइंड कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं? हम cos रूल यूज करके RQS के अंदर Q की वैल्यू, Q का एंगल निकाल सकते हैं. ठीक है, हाउ डू फाइंड QS नाउ? वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर हमें पता है PQ की लेंथ क्या है, हमने पिछले बार में निकाली है 16.7. कैन वी फाइंड QS नाउ? QS is adjacent to the angle. 16.7 is opposite to the angle. Opposite और adjacent में क्या रेशियो होती है? Tan. So we can say tan of 36 degrees should equal opposite, which is 16.7, divided by adjacent, which is QS. तो QS क्या हो जाएगा फिर? QS is going to be 16.7 over tan of 36 degrees.
ये आप evaluate कर लेंगे कैलकुलेटर से, आप देखेंगे आपके पास क्या आता है। ठीक है, let me do that. 16.7 divided by tan of 36, and that is giving me 22.985. That's 22.99 essentially. That's the length that we're getting for QS. Okay, यहाँ पे लिख लेते हैं, this is 22.99. ये लेंथ भी आ गई हमारे पास, जब ये लेंथ आ गई तो एंगल Q अगर फाइंड करना है, Q के ऊपर ये वाला एंगल, कोसाइन रूल यूज कर लें, 3 साइड्स हैं, एक एंगल मिसिंग है, बस फॉर्मूला के अंदर इनपुट कर दें. This is what the formula looks like. A square equals B square plus C square minus 2BC cos A. या अगर आपको एंगल वाली फॉर्म याद है वो भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्मूलाज हैं बेसिकली, रीअरेंज किया होता है. अब ये जो साइड लेफ्ट पर आ रही होती है, इसके ऑपोजिट एंगल यहाँ पर होता है. ठीक है, तो अगर आपने ये Q वाला एंगल निकालना है तो लेफ्ट साइड पे साइड कौन सी आ रही होगी, इसके ऑपोजिट 30. Okay, so we have 30 squared equals 11 squared plus 22.99 squared minus 2 into 11 into 22.99 into cos of the angle RQS. Okay, I really struggle to write straight when we don't have a lined paper. So that's what the issue is here right now. Okay, so cos of RQS. Okay, ये आपने एंगल फिगर आउट करना है. रिमेंबर ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी केयरलेस एरर्स होते हैं. प्लीज मेक श्योर आप ये ब्रैकेट्स में लिखें इसको प्रॉपर्ली. मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारी एक्सप्रेशंस. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई एवरीथिंग. बिफोर यू डू एनीथिंग लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई. 30 स्क्वायर क्या होगा, 900. राइट साइड पे 11 स्क्वायर प्लस 22.99 स्क्वायर, ये इवैल्यूएट कर लें. दिस इज 649.5 4 माइनस ये मल्टीप्लाई कर लें 22 into 22.99, that is 505.78 into cos of RQS. Okay, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस कर दें. What does that give you? 900 minus 649.54, and that turns out to be 250.46 degrees. Sorry, not degrees, 250.46. अब इसको डिवाइड कर देंगे इस नंबर से, and that's going to be minus 505.78. On the other side, we have cos of RQS. ठीक है, ये नंबर इवैल्यूएट करें, उसको cos इनवर्स ले लें, आपके पास एंगल आ जाएगा RQS. लेफ्ट साइड वाला नंबर इवैल्यूएट करें, डिवाइड करें उसको minus 505.78 से, and then take cos inverse of that, and that is giving me 119.68. So that's 119.7 degrees. That's the angle that we were looking for, 119.7 degrees. Okay, now it might be easier if you use the angle value form directly. If you remember that, that would look like this. Cos of A equals B square plus C square minus A square divided by 2BC. You could also use that. उससे जरा जल्दी एक स्टेप बच जाता, if you remember that. Okay, वो भी आप यूज कर सकते हैं. You get the same result from that as well. Of course, ये same equation है दोनों. There's no difference between the two. सिर्फ उनको rearrange करके रखा हुआ है. That's the result that we get at the end, 119.7 degrees. All right, let's move on to the next one. Part C of this. Now it says a third rope is attached from P to a point T. TPQ, the angle TPQ is 40 degrees and PQT is 97 degrees. Calculate PT. अच्छा, उसने अलग से ट्रायंगल आपको दे दिए और आपने उसने आपसे कहा है आपने लेंथ फाइंड करनी है PT. Now we can use sine rule here, right? Do we have a pair of angle and side? ये हमें साइड फाइंड करनी है. Let's call this x. ये साइड x है, इसके ऑपोजिट एंगल हमें पता है. That's okay. जो साइड गिवन है that's 16.7, इसके ऑपोजिट एंगल में पता है? Well, नहीं पता, लेकिन हम उसको फाइंड कर सकते हैं because we know the other two angles.
So 97 plus 40, 137 को minus कर दें 180 में से, that gives you 43 degrees here. Okay, 180 में से बाकी दोनों angles minus कर दिया, 43 degrees आपका remaining angle आ गया. So you have a pair here that's given, और दूसरा pair में से एक चीज missing है, आप sin rule use कर सकते हैं. You can say x over sine of 97 degrees, that equals 16.7 divided by sine of 43 degrees. And now you can find the value of x from this, cross multiply and see what you get from that. 16.7 into sine of 97 divided by sine of 43, and that is giving me 24.3. Okay, so length of PT turns out to be 24.3 meters. That was pretty straightforward actually for 4 marks. आपको सिर्फ इसमें क्या करना था, sine rule use करना था. Okay, that was part C here. Let's move on to question number 10. So now we have a point D that has coordinates 4 and 6, and E is the point EE. The length of DE is given to be square root of 20. We need to form an equation in E and solve it to find the possible coordinates of the point E. And we have to show our work in. Okay. Distance दिया हुआ है उसने DE. Distance formula use कर लेंगे. Right? DE length is square root of 20. Remember what the distance formula is? It looks like this. x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared. इसका square root, that is equal to square root of 20. इसमें से किसी को भी आप x1 y1 कर लें, किसी को भी x2 y2 कर लें, that doesn't matter. Let's say this is x1 y1, this is x2 y2. Now you just have to input values here. Okay, square root खत्म कर, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, square root खत्म हो जाएगा. लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ गया, e minus 4 whole squared plus e minus 6 whole squared. On the right side you have 20. Square root हमने खत्म कर दिया square लेके. Okay, so this gets cancelled on both sides. This is the equation that we have. ये हमने equation बना ली. अब इसको solve करना है और e की values वगैरह ऐड करनी है. Okay, let's simplify this. So expand करना पड़ेगा. E minus 4 whole squared, that's a minus b whole squared. It becomes e squared minus 2 into e into 4, that's 8e plus 4 ka square, that's 16, plus e squared minus 2 into e into 6, that is 12e plus 6 times 6 ka square, that is 36. 20 दूसरी side से यहाँ पे left पे ले आए, that's minus 20 equals 0. This is now a quadratic equation. We can solve this quadratic equation. We can simplify this first of all. E squared plus e squared, that becomes 2e squared minus 80 minus 12e, that is minus 20e. Constants are 16 and 36, that's 52. 52 minus 20 is 32. Okay, e squared minus 10e plus 16 equals 0. This is the quadratic equation that we're getting from this. ठीक है, अब इस quadratic equation को हम solve कर लेते हैं. Can we factorize this? 16 आपके पास कैसे आ सकता है 8 और 2 से? So we can say this is e squared minus 8e minus 2e plus 16 equals 0. Let's factorize. It gives us e into e minus 8 minus 2 into e minus 8. And we get two factors from this, e minus 2 and e minus 8. This equals 0. That means e either equals 2 or e equals 8. These are the two possible values of e that we're getting. अच्छा, उसको ऊपर क्या कहा था? Form an equation in E and find the possible coordinates of E. Possible coordinates का मतलब है it is likely कि आपके पास एक से ज्यादा possibilities आ जाएं. दो values आ रही हैं E की, coordinates E के क्या हैं? E and E. तो एक, सर यहाँ पे उसने clearly यहाँ पे mention भी कर दिया, दो उसने spaces दे रही हैं. एक possibility क्या हो सकती है? You have 2 and 2, right? And the other possibility is you have 8 and 8. These are the two possible points that we can have here. Okay, 2, 2 and 8, 8, such that the distance is equal to square root of 20. That was part A here. Let's move on. Part B. Now it says F is the point minus F and 5F. The gradient of the perpendicular bisector of DF is 3 over 2. Find the value of F. Okay, now that's interesting. It's often helpful in problems like this to try to visualize this first of all.
DF is a line. Okay, so we have a point D here. D के coordinates क्या हैं? D is 4 and 6. And we have a point F, which is minus F and 5F. ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपके पास. उसने कहा है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो इसके मिड पॉइंट से पास करता है, and it's perpendicular to this line, so it goes like this. Okay, this is the line that we're talking about. इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? उसने कहा इस लाइन का ग्रेडियंट is 3/2. Given this, we need to find the value for f. Okay, what we can do for this is we can use the property that we have for perpendicular lines. Did not understand what? Can you be more specific? I'm sorry, I just saw your message. Okay, find the value of f. अच्छा, अब इसमें देखें क्या होगा. ये हमारे पास df एक लाइन है. df का जो ग्रेडियंट होगा वो 3/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, राइट? परपेंडिकुलर लाइन से ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है. ओके, तो आप क्या करें? df का ग्रेडियंट निकालने पहले. Let's find the gradient of df first of all. What is that going to be? y2 minus y1 or x2 over x2 minus x1, right? We can say this is x1 y1 and this is x2 y2. Okay, now what do we get from this? Gradient df, ये क्या होएगा? y2 minus y1, that's 5f minus 6. That's what we get from the vertical axis, divided by y2 minus y1 divided by x2 minus x1, that's minus f minus 4. Let's simplify this and see what we get from this. 5f minus 6 over, in fact ये वैसे रहेगा, minus f minus 4. अच्छा, अब ये देखिए df का ग्रेडियंट है. आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आपको दिया हुआ है perpendicular bisector gradient. That is 3/2, right? Perpendicular bisector gradient 3/2 है. तो df का gradient क्या होना चाहिए फिर? That should be negative reciprocal of this. That's minus 2/3. इसका negative reciprocal, right? Because perpendicular lines जो होती हैं उनके gradients एक दूसरे के perpendicular, gradients एक दूसरे के negative reciprocal होते हैं. So हम क्या करेंगे? इसको minus 2/3 से equate कर देंगे. All right, and now let's just simplify this and find the value of f from this. Cross multiply कर लें. Minus 2 into minus f minus 4, that equals 3 into 5f minus 6. ठीक है, इसको simplify करें. आपके पास क्या आता है? Minus 2 into minus f, that is 2f. Minus 2 into minus 4, that's plus 8. On the other side, we have 15f minus 18. And that gives us 13f equal to 8 plus 18, which is 26. और f की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 26 over 13, that's 2. F equals 2 from this. That's the final result that we get. Okay, ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई. Let's move on to part 2. Now it says the equation of the perpendicular bisector is given. Find the value of k. Perpendicular bisector की equation उसने इस तरह से दी हुई है, आपको k find करना है. Now, how do we think about this? अब देखिए perpendicular bisector हमने यहाँ पे ऊपर प्लॉट किया, एक तरह से रफ स्केच किया है. Perpendicular bisector क्या लाइन होती है? That passes through the midpoint of this line and is perpendicular. तो इसका मतलब ये होगा जो इसका मिड पॉइंट है d और f का, let's call this point m. ये perpendicular bisector जो है वो point m से पास कर रहा होगा, right? Can we find the coordinates of the point m now? Because now we have the value for f, right? So coordinates of d are given. They were 4 and 6. And the coordinates of f are minus f and 5f. You can write them here first of all, minus f and 5f. अगर हम ये f की वैल्यू यहाँ पे input कर दें, what do they become? f की वैल्यू 2 है. So the coordinates turn out to be minus 2
and 5 into 2 that's 10. ये हमारे पास f के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होएगा, x1 plus x2 over 2, that's 4 minus 2 over 2. y1 plus y2 over 2, that's 6 plus 10 over 2. The coordinates of m therefore turn out to be 2 over 2, which is 1, 16 over 2, that's 8. ये जो perpendicular bisector है, it has to pass through this point. It has to pass through this point m. Okay? इससे पास करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये पॉइंट इसके अंदर इनपुट कर देते हैं। We have the equation 2y equals 3x plus k. इसके अंदर ये पॉइंट इनपुट कर दें। Put 1 and 8 in this. x की जगह पे 1 डाल दें, y की जगह पे 8 डाल दें, and see what you get from that. क्योंकि ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है, it should satisfy the equation of that line. So we get 2 into 8 equals 3 into 1 plus k, and that is going to give you the value for k. So we have 16 equals 3 plus k. The value of k turns out to be 13, and that is what we have as our final answer here. Okay, k की value हमारे पास 13 आ जाती है, and that's what we were looking for. That's our final result. Let's move on, and that's it. That was question number 10, the last question of this paper, and that completes this paper as well. So we're going to end this class here. If you have any questions, you can post them in the chat box in the comment section below. And just a reminder, if you haven't already, subscribe the channel for more content. You can also have a look at the description below to find a lot of other useful content that is already posted on the channel. You have videos on the major topics that you have in O-level maths. उनके concepts सारे covered हैं, उनके past paper questions, topical past paper questions, and you'll also find a playlist for yearly past papers that includes all the solved past papers that I have posted until now. You can also find all of them there. Okay, so that's it for today. I'll see you tomorrow, inshallah, with the next paper, which is going to be October-November paper 1, variant 2, inshallah. All right, so this is it for today. See you again tomorrow. Allah Hafiz.